Remember we did idioms, phrases, अखान, मुहावरे, याद है? So use करते हो बेटा? चलो आप कुछ आज करते हैं। मैं कुछ पंजाबी च बोलांगी, तुसी इंग्लिश बोलना, तुसी इंग्लिश बोलोगे तो पंजाबी च डिस्कस करांगे। And I'm sure it's going to be a very very energetic, interesting, exciting activity. सब तो पहला अगर मैं कहा कि okay, go ahead, break a leg. What does it mean? Okay, go ahead. Your exams are over now. Go ahead, break a leg. Huh? Party hard, yes. Have fun, have fun. So please make a sentence also. Make a sentence also. Huh? Let's go. So party hard. Hanji, Hanji. Yes. Any song that you remember which break a leg means? और बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल. So have fun till 4 in the morning. That's fine. Then next, note कर रहे हो बेटा? You can note down if you wish. कई बड़े अच्छे आएंगे. Cost an arm and a leg. That is gonna cost you hard if you're gonna do that work. Cost an arm and a leg. ਕੀ मतलब है इसका? Huh? It is going to cost you your arm and a leg. ਕੀ मतलब है इसका? Determination. Yes? Determination. Determination. हाँ, वो भी हो सकता है पर इस idiom का मतलब नहीं है. तुसी arm और leg तो लिया शायद मेहनत है ना? No. I guess Dilpreet was right. इसी मतलब बेटा? Ma'am, that if you're gonna do something and it's like a difficult task you're performing, so it's gonna cost you hard. हाँ, expensive. कोई चीज बहुत महंगी होए, मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ कीमती चीज होएगी कि अगर एक बाँ और लत भी दे दांगे तो मतलब तुसी नहीं ला सकोगे और वाकई बड़ा मुश्किल है. Next is butterflies in stomach. हाँ? Hungry? भूख लगना? वो तो चूहे नहीं होते? वो चूहे होते हैं. हाँ. Please make a sentence. When do you have butterflies in stomach? When I, please stand up. Anyone who wants to make a sentence, yes. When I, menu देख के. Is it? Menu देख के butterflies in stomach. It's a compliment. Whenever I have to appear for some interview, or the exam times is coming near, I experience butterflies in stomach. बहुत मतलब कुछ होता है अंदर, कुछ जिन्हों पंजाबी में कहते हैं, हाँ कुछ होता है. चित्त का उमंग करता है. चित्त का उमंग करता है. All right, चलो. चित्त का उमंग करता है. हाँ जी. अगला, next. Mutton dressed as lamb. मटन ड्रेस देख लो कल इंग्लिश बोलनी तुसी और आम भाषा बोलने नालों ए वर्ड यूज करोगे तो इज्जत बड़ी बननी है. तो ਇਹਦਾ ਹੁਣ मतलब ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ है. हाँ जी, गूगल नहीं कोई करेगा, मैं खड़ी है इत्थे. आई एम गूगल. मटन ड्रेस्ड एज लैम्ब. Anyone? Yes? नहीं. हाथी के दांत खाने नहीं. हाथी के दांत खाने के वाला नहीं है. नहीं. Mutton dressed as lamb. Okay, 5. I give you 5 seconds. Last 5 seconds. इसे अच्छा present करना. हाँ हाँ बिल्कुल. Yes yes. You're quite close. क्या? Show off करना? नहीं. Could it be like a person who is not raised at all and comes out as a काफी gentleman personality? All right. No. अच्छा, I'll give you a hint. Dilip Kumar died
casting रह गए. If Dileep Kumar comes dressed in all red and everything. Shocking. Shocking. पंजाबी नोट करो ये. बुढ़ी कोड़ी लाल लगाम. Mutton dressed as lamb. An old man, gentleman, dressed as a young person. Amitabh Bachchan भी मैं नाम नहीं लाऊंगी because he is very young. So I said Dileep Kumar. I mean, Amitabh Bachchan looks awesome every time. He's a quiz master. He's a singer.